Hello everybody. This is one of the sum based on polynomial asked in 2018. क्या कह रहा है कि अगर आपका x plus 2 और x plus 3 they are the factors of this polynomial, find the value of a and b. तो कम ऑन पहले तो ये जाने कि अगर x plus 2 is a factor of this polynomial x cube plus ax plus b, so in that case x plus 2 is equal to 0, x equal to -2 अगर हम इसमें पुट करेंगे तो in that case my remainder will be 0. Remainder will be equal to 0 from remainder theorem. So let us put, this means -2 whole cube plus a into -2 plus b will be equal to 0. यानी -2a प्लस b विल बी इक्वल टू उस तरफ -8, इस तरफ आके +8. दिस इज योर इक्वेशन 1. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी विल सॉल्व इट इन सिमिलरली. x plus 3 is a factor of the polynomial x cube plus ax plus b factor. Then in that case x plus 3 is equal to 0, x equal to -3. If we will put this in, this polynomial, my remainder again will get it as 0. Why? Because of remainder theorem. So let us put -3 whole cube plus a into -3 plus b equal to 0. Remainder is equal to 0. That is -3a plus b will be equal to उस तरफ -27 आके यहाँ पे 27. This is your equation 2. Now we will solve this both the equations. -2a plus b equal to 8 and -3a plus b equal to 27. Let us solve this. So we'll have to cancel b को cancel करते हैं तो साइन सबका चेंज होगा. This 27 will become -27, -3a plus 3a. This gets cancelled. Here you will get a is equal to -19. This is one of the value that we were asked. अब b निकालना है तो आइए ये b निकालते हैं. b निकालने के लिए हम कोई भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 हो चाहे इक्वेशन 2 है हो, दोनों में हम पुट करेंगे, किसी एक में पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा. दिस मीन्स लेट अस टेक वन ऑफ द इक्वेशन. वन ऑफ द इक्वेशन में मतलब है कि -2a प्लस b इज इक्वल टू 8. b विल बी इक्वल टू योर 8 प्लस 2a. b विल बी इक्वल टू 8. द वैल्यू ऑफ a इज -19. यानी यहाँ पे हो जाएगा -19 2 times 38. यानी b is equal to -30 is the final solution. If you have learned something, do like, subscribe, share it among your friends. Thank you so much for learning.